Hello students, welcome to the fourth part of our video of series 100 most important questions for TGT PGT MA English entrance. Please do not forget to share and subscribe the channel and take down all the notes, facts, explanations, and do not run after just knowing the correct answer. Know the details behind it and please do a thorough study. Let us begin with the question number 31 now. You may join our channel to get access to more videos for your preparation. क्वेश्चन नंबर 31। आप सिर्फ करेक्ट ऑप्शन के लिए ही क्वेश्चंस को मत देखिएगा, उसके पीछे की स्टोरी भी ज़रूर जानिएगा और मुझे अपना स्कोर बताइएगा आउट ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स। सो सैमुअल बटलर्स ह्यूबी-ड्रेस इज मॉडल्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले ह्यूबी-ड्रेस के बारे में जानते हैं। ये एक इंग्लिश मॉक हीरोइक नैरेटिव पोम है, 17th सेंचुरी की, लिखी गई है सैमुअल बटलर के द्वारा, जो कि पब्लिश हुई थी इन द आफ्टरमैथ ऑफ इंग्लिश सिविल वॉर। द नेम ह्यूबी-ड्रेस इज डिराइव्ड फ्रॉम Fairy Queen and the setting of the poem is imitated from Don Quixote. Option number B, Don Quixote is the correct answer. Next question is related to essays of Elia. Essays of Elia को हम इन चार में से किस कैटेगरी में रख सकते हैं? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सोशल क्रिटिसिज्म, पर्सनल इम्प्रेशंस और लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एसेज ऑफ एलिया के बारे में जानते हैं। ये एक कलेक्शन ऑफ एसेज है जो कि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया था और सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1823 में। आपको इसके ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, इसके काफ़ी पॉसिबिलिटी है। पहले पब्लिश हुआ था 1823 में और इसकी सेकेंड वॉल्यूम इशू हुई थी 1833 में। तो ईयर्स को याद रखिए बहुत अच्छे से। द पर्सनल एंड conversational tone of the essays have charmed many readers, and the essays established Lamb in the title he holds now that the most delightful of English essays. तो इन essays में हमें personal impressions देखने को मिलते हैं। Option number C is the right answer. Next question. Question number 33. Dream Play is a famous work of which writer? Dream Play जो कि 1901 में लिखा गया था बाय द स्वीडिश प्ले राइट ऑगस्ट स्ट्रिनबर्ग। जोहान ऑगस्ट स्ट्रिनबर्ग वॉज अ स्वीडिश प्ले राइट। आप लोग नेशनैलिटी भी बहुत अच्छे से याद रखिए। एंड द बेसिक थीम इज द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म इन द कैपिटल ऑफ स्वीडन, स्टॉकहोम, ऑन 17 अप्रैल 1907। 1907 में इसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी एंड it remains one of his most admired and I'll say influential dramas, seen as an important precursor to both dramatic expressions and surrealism. तो ड्रीम प्ले एक ऐसा प्ले है जिसने स्ट्रिनबर्ग को बहुत ही फेमस बना दिया है in the field of literature. Next question number 34. Who is not a member of Bloomsbury Group? Concentrate on the word not. अब हम options देखते हैं। E.M. Forster, Leonard Woolf, Lytton Strachey, G.B. Shaw. Bloomsbury Group या Bloomsbury Set भी कह सकते हैं। कुछ इंग्लिश राइटर्स, इंटेलेक्चुअल, फिलोसोफर, आर्टिस्ट का एक एसोसिएटेड ग्रुप था जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। इनमें कुछ बहुत ही फेमस लोग थे जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ, लेनर्ड वुल्फ, जॉन बेनेट केन्स, E.M. Forster and Lytton Strachey. G.B. Shaw, this option. G.B. Shaw was not a part of it. So option number D becomes the right answer. Next question number 35. Who is the pioneer of aesthetic moments? Aesthetic moment जिसको कि हम art for art's sake के नाम से भी जानते हैं. This moment popularized British culture during the later part of 19th century, as well as it was spreading to other countries also, such as United States, and based on the idea that beauty was the most important element in the life of writers, artists, and designers, and people admired anything first because of the aesthetic impression of it. किस तरीके की कोई चीज लग रही है। Things are appreciated because of their beauty rather than any narrative or moral function. ऑस्कर वाइल्ड कहें तो इस मोमेंट के एक मेजर रिप्रेजेंटेटिव थे, द मेजर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एस्थेटिक मोमेंट, बट that is not the correct option. Correct option is option number A, Walter Pater. Walter Pater is known as the chief theorist of the aesthetic moment. Next question number 36, related to the Oxford moment. The Oxford moment was fundamentally a moment for social reform, religious reform, political reform or economic reform.
ऑक्सफोर्ड मोमेंट, जो कि 19th सेंचुरी की एक बहुत ही फेमस मोमेंट है, सेंटर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड which sought actually a renewal of Catholic or Roman Catholic thought, we can say, and practices within the Church of England in opposition to the Protestant tendencies of the church. It was hence a religious moment within the Church of England, as I told, based at the University of Oxford, which began actually in 1833. 1833 में इस मोमेंट की शुरुआत हुई थी, and the members of this moment were known as Tractarians as well. That can also be a question. Members of Oxford moment were known as Tractarians. Question number 37. The author of L'Effet du Mal is which of the following? Flaubert, Mallarmé, बॉल्डेयर और गॉटियर. लिफ्लर डी मॉल एक वॉल्यूम है फ्रेंच पोइट्री का, जो कि लिखा गया है चार्ल्स बॉल्डेयर के द्वारा. इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1857. 1857 में ये पब्लिश हुआ था, एंड इट वॉज इम्पॉर्टेंट इन द सिम्बॉलिस्ट एंड मॉडर्निस्ट मोमेंट एज वेल. द पोइट्री, दिस पर्टिकुलर पोइट्री डील्स विद द थीम्स रिलेटेड टू फॉल, डिक्लाइन एंड सेंशुअलिटी. So option number C here is the right answer. Next question. Question number 38. Which novel of Hardy portrays a girl simple, sensuous and passionate who never comes to terms with the world? Correct answer. Option number B. Tess of the Urbervilles. Tess of the Urbervilles जिसका कि सबटाइटल था अ प्योर विमेन फेथफुली प्रेजेंटेड. आप लोगों को सबटाइटल्स भी याद रखने हैं. दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1891 and can be considered as the masterpiece of Hardy, and it relates the story of a simple, sensuous and passionate girl, Teresa Tess de Urbervilles. इस नॉवल को एक बहुत ही सीवियर लेवल का क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था फॉर डिपिक्टिंग द हीरोइन एज अ प्योर विमेन, which was maybe against the sexual norms of the Victorian days, and the novel was rejected initially by many publishers for its pessimism and obsession of sex, but was later released, and today we are studying it as a student of literature. Next question, question number 39. Which of the following works by Stevenson illustrates the doubleness of man's nature? यानी कि अच्छाई और बुराई एक ही इंसान के अंदर छिपी होती है. कौन से नॉवल में ये डिपिक्ट किया गया है? The correct answer is option number D, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Scottish author Robert Louis Stevenson wrote a classic story about the two sides of human nature called The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. In Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Dr. Jekyll is a well-respected, intelligent scientist who secretly has a very dark, immoral side to his personality as well. And through this change in Jekyll's character, Stevenson shows the duality in human nature, the idea that everyone is capable of good and evil deeds. हर इंसान के अंदर ही अच्छाई और बुराई दोनों छिपी हैं. Next question, question number 40. The novel The Man Who Was Thursday was written by which of the following writers? The correct answer out of these is option number B, G.K. Chesterton. It was a novel by G.K. Chesterton, first published in 1908. And this is referred to sometimes as a metaphysical thriller as well. एक masterpiece है, and it represents a suspenseful thriller with impressively stylish language and a thoughtful work of metaphysical. This is the end of the fourth part of the video. Please tell me your score. Now we will soon meet with the next part. Keep studying, keep practicing. This will be your key to success. Do not forget to share and subscribe, and you may join our online classes, or you can join our channel to get access to more videos.